Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction. विश्व निशाने पर है, पर अब विश्व निशाने पर रहेगा नहीं। इसके लिए जो तुमने अभियान चलाया है उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई व आशीर्वाद। सबसे पहले मैं आपके समक्ष पर्यावरण पे मेरी सबसे चर्चित कविता विश्व निशाने पर है, ये काव्य से निकला है, उसकी पहली कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता है विश्व निशाने पर है और ये इकलौती कविता है जो मुझे याद रहती है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन बात सिर्फ बधाई और शुभकामनाओं से बनने वाली है नहीं, क्योंकि विश्व निशाने पर है। पानी, मिट्टी, वायु, जंगल और पहाड़े हम दोहन करते, संसाधन नहीं हमारे, पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे, आने वाले कल को आज हराने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। सृष्टि बची रहे, प्रकृति बची रहे, जीवन बचा रहे, इसके लिए सजग होना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमने उनके घर में घुसकर उनको लूटा, मारा पीटा, नोचा खींचा, ठोका कूटा, छीना छपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा, तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। इस दिशा में एक युवा लगभग 2 दशक से अनवरत प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के लिए उन्हें अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने, रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने, धरती बच जाएगी हम ही जाने पर हैं, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। क्लाइमेट क्राइसिस यानी कि जलवायु संकट को लेकर उन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है, उसमें देश विदेश से अनेक लीजेंड और संस्थाएं जुड़ती जा रही हैं। उस युवा का नाम है डॉक्टर निखिल कांत, प्रकृति के कवि, क्लाइमेट प्रैक्टिशनर, विश्व निशाने पर है के संस्थापक डॉक्टर निखिल कांत। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। तो इस अनोखे कार्यक्रम जिसका नाम है विश्व निशाने पर है में एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन।
नमस्कार। विश्व निशाने पर है जलवायु संकट जागरूकता अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण दिवस भी है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की भी शुभकामनाएं और बधाई हम एक दूसरे को दे देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व निशाने पर है जलवायु संकट जागरूकता अभियान की स्थापना विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे के दिन 2004 में हुई थी। उस आधार पे विश्व निशाने पर है अभियान का फाउंडेशन डे 22 अप्रैल को होता है। लेकिन हमने 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इन दोनों के बीच जो 45 दिन का अंतर है, कहीं न कहीं अपने ही इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सीख लेते हुए हमने इन दोनों प्रोग्राम को जो 22 अप्रैल से 5 जून विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के बीच में जो 45 दिन होता है, इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ा हमने, क्योंकि वर्ल्ड अर्थ डे एक ऐसा कार्यक्रम है जो अवेयरनेस के लिए होता है, ग्राउंड लेवल पे काम के लिए होता है और पहला और इतना बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस के लिए सिटीजन लेड प्रोग्राम था। जबकि 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, तो ये एक यूएन लेड प्रोग्राम था और यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग लेवल पे चीजें आने लगती है, इंटरवेंशन यहाँ पे पॉलिसी का आने लगता है। बहुत ज्यादा आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुझे हमेशा से बहुत ही प्यारा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे मुझे कम बोलना होता है। किसी को मुझसे सुनने की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि मुझे मैं लोगों को सुनूं, मैं ऐसे क्लाइमेट प्रैक्टिशनर को सुनूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने काम में अपनी महत्ता साबित करते हुए अपने आप को एक क्लाइमेट प्रैक्टिशनर भी सिद्ध किया है और उनकी कहानियों के माध्यम से हम सभी मोटिवेटेड हों, इनकरेज्ड हों। तो आज हमने अपने इस मंच पे, इस समृद्ध मंच पे वैसे लोगों को आमंत्रित किया है जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी तो हैं ही, लेकिन साथ ही वो क्लाइमेट प्रैक्टिशनर भी हैं और आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे वो छोटे-छोटे या बड़े-बड़े क्लाइमेट प्रैक्टिसेज अपने लेवल पे प्रोएक्टिवली करते रहते हैं। इन सब ऐसे समृद्ध मंच को आमंत्रित करने के लिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जो सबसे बेहतरीन इंसान हो सकता था और जो खुद ही बहुत ही क्लाइमेट कॉन्शियस है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, श्री ओंकारेश्वर पांडे जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो एक इंटरनेशनल फोरम ग्रीन प्लेनेट फोरम के फाउंडर हैं और साथ ही साथ वो ग्लोबल सिग्नेचर्स के फाउंडर सीईओ भी हैं। आज मैं ओंकारेश्वर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का वेलकम लौटे। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, Dr. Nikhil Kanji. Thanks for giving this opportunity, and I extend my heartfelt gratitude to the team of Vishwa Nishane par hai, a climate crisis awareness campaign, and especially to its founder, to you, Dr. Nikhil Kant, and Dr. K. Anjali for giving me this opportunity to deliver this welcome note and to be associated with this profound campaign as a strategic advisor to this Vishwa Nishane par hai Foundation. It's an honor to be a part of this campaign since last 21 years, I think, which remained a 100% voluntarily people-powered force rooted in poetry, music, storytelling, and proactive personal climate actions. In a world where the climate crisis is no longer a distant possibility, but an undeniable reality marked by extreme weather, ecological imbalance, and growing uncertainty. The need for climate and emotional awareness is more urgent than ever. But meaningful change doesn't begin with policies alone. It begins with people. When individuals make small, positive, climate conscious choices, and that is exactly what Vishwa Nishane par hai, meaning planet is on target, has championed for over 2 decades. This campaign has empowered thousands of people, planet mates, to shift the narrative from you should do this to I already do this, all through creativity, compassion, and community driven storytelling. Today, this 21st anniversary is also a deeply emotional moment for the Vishwa Nishane Par Hai family, VNPH family, as it is lovingly dedicated to Mrs. Mridula Shrivastava,
revered mother of Dr. Nikhil Kant, founder of this foundation, who left for her heavenly abode on 16th of January this year, 2025. She was a guiding spirit behind the campaign from its very inception. So, VNPS has close to her heart, and her voice and spirit continue to guide and inspire us beyond time. With immense warmth, I welcome our distinguished guests for this evening today. First of all, I would like to welcome Dr. Amar Patnaik, who has served as a very distinguished bureaucrat and now a very decorated, very sincere, and very intelligent member of parliament in the Rajya Sabha. Mr. Josh Manuel Norona, he has served as the chairman of the Goa Public Service Commission. Mr. Emerson Risene, with over 15 impactful years at the United Nations, and Mr. Akhilendra Mishra, a celebrated theatre artist and decorated film star, television artist. Professor Dilip Kumar M., Vice Chancellor of Hansard University in Nigeria, and many more. We are honored by your gracious presence and contribution to this global celebration of climate consciousness. And to all the planet mates, volunteers, artists, whosoever is connected to this campaign, educators and youth joining us from around the world, I welcome to you all to this soulful gathering of voices for the planet. May this evening be a confluence of wisdom, emotion, and inspiration. And with that, I would like to hand it over back to soul of this campaign, the founder of Vishwa Nishane Par Hai, Dr. Nikhil Kant, to take this today's conference forward in this extraordinary journey. Thank you. Thank you so much, Dr. Nikhil Kant. Thank you, sir, and thank you very much for the precious time that you have taken out, and at the same time, the invaluable words that you have shared with us. So you have set the tone, the agenda of the program, and now this is time to invite Dr. Amar Patnaik, sir, whom we have invited as a climate practitioner. And a brief introduction I would like to give for starting the, the statement, the climate practitioner statement by Dr. Amar Patnaik, sir. Dr. Amar Patnaik has represented Odisha in the Rajya Sabha, and he is a former bureaucrat and a key member of the Biju Janata Dal, contributing to finance and environmental legislation. A lot you have also talked about Patnaik, sir. So I invite him to share his practices with the august audience. Thank you so much, Dr. Nikhil Kant. First of all, I would like to thank you and your foundation, Vishwa Nishane Par, for this, I think, innovative and as Omkareshwar ji said, a soulful confluence of climate practitioners who consider Mother Earth as really their mother, and therefore are joined together here for sharing their experiences. And may some of those be found to be useful for all those who care and concern for the climate challenges, may take some leaf out of that and practice it themselves. As someone who has served in public life, I've always believed that policy can shape possibilities, but people shape change. Today, I want to speak not as a policymaker, but as a fellow citizen about the small personal steps we can all take, which, when multiplied, create a powerful wave of climate positive impact. Let me begin with something very simple from my own life. One habit I've kept for years is this. You must have heard about this from many people. I never leave a room without turning off the lights and appliances, particularly in toilets, bathrooms, washrooms, or in the staircases of households and office spaces. It may sound trivial, but it's not. In fact,
Energy consumption in the households and office spaces is one of the largest contributors to carbon emissions. Just by being mindful about electricity, like turning off fans, air conditioners, chargers of mobiles when they are not in use, we reduce not just our bills, but also a burden on the planet. It's a small discipline that, if practiced in every home and office, could save millions of units of electricity annually. Another area which you might find interesting, I focus on in my office space, at my home, even when I travel abroad, is reducing paper wastage. In today's digital age, we still rely heavily on printing in offices, but we can save a lot of carbon footprint there. That's why I always promote printing on both sides of paper, reusing old sheets for rough notes, and minimizing unnecessary prints. In offices and public institutions, even a small shift in printing habits, I guess, can lead to a significant conservation of trees, water, and energy. When we talk about sustainability, I speak not just in theory, but from lived experience. I come from Odisha, a state where nature is deeply woven into daily lives and where farmers live at the front line of climate change. They are among the first to feel the impact of erratic rain patterns, rising temperatures, and shifting seasons. Supporting them isn't just a rural issue, it's a climate issue. That's why I began choosing local seasonal foods over imported produce. Supporting our own local farmers reduces food miles, builds resilience in rural economies, and reinforces sustainable ecosystems. These might sound like ordinary actions, and that's the point. The most powerful climate solutions don't always require cutting edge technology or a huge climate adaptation finance. They require consistent and conscious choices, and as our Prime Minister has espoused, the life practices. I have seen firsthand that when leaders set an example, whether in politics, education, or business, people listen. But when individuals act in unison, in consensus, people follow. You don't have to be in parliament to make policy. You can make it every day by what you buy, how you travel, what you vest, and what you value. In the 3 R's that everyone is familiar with, the first R is reduce, then goes to reuse, and then finally to recycle, and not the other way around. Today, I urge all my planet mates across professions, across generations, across countries to reflect on their daily habits. What we do at home, at work, and in our communities, it matters. Your choices matter. And together, our choices compound into meaningful change for planet Earth. The climate crisis can often feel overwhelming, but we must remember the path to a sustainable future is built not only through grand declarations, but through everyday discipline. Let us be the generation that looks back and says, we did what we could, where we were, and whatever we had. And let that be enough to turn the tide. There in Sanskrit, there is a quotation that I would like to quote here. Punyena adhyushta punya prithvi punyena santuna. What means? May the earth be protected by our good deeds, and may our good deeds be protected by the pure water. May the pure water be protected by our good deeds, and may our good deeds be protected by the pure earth. Punyena adhyushta punya prithvi punyena santuna. It emphasizes the interconnectedness of natural elements and the importance of protecting them through our own positive actions. Thank you so much. I wish the foundation all the very best is the yeoman service that they are rendering in their small but significant ways to
to change our habits, our belief systems, the way we look at the world, the way we perform our actions to protect Mother Earth. There could be no greater service to Mother Earth than one of these ways in which Dr. Nikhil Kant and his organization are working. Thank you so much. Namaskar. Thank you very much, sir, for your precious time. And at the same time, the way you have motivated us by sharing the things that you have done in the past and you are doing even now and since childhood. So we have taken note of it, and we would certainly be doing something so that the things that you have shared here, that would be brought to the notice and the information of all these people across, not only India, but across the globe. Sir, before I request you to get engaged with other things that you might have been. I would request to launch one of the initiative, that is VNPH Poetry, and with your permission, we are going to launch it today. Sure. Please go ahead. So thank you very much, sir. And Excellent. actually, yes, sir. Sir, we actually are running short of time, and all these august audience also must not be having that much time. So we are not elaborating all these, initiatives. All the information are there on the website and the channels. So they would be visiting that site and all. And thank you very much for being here, sir. And we are looking forward to getting. Wish you all the very best. Thank you to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So we were hearing from someone who has contributed immensely to the Indian polity, to the Indian society, and the entire ecosystem. Now is the time to request our next guest, who is Mr. Jose Manuel Noronha. Sir, if I have pronounced it right. Yes. So I welcome you. So, sir, I welcome you to this VNPH anniversary celebrations, and we have already elaborated on the things that we have been doing, and there are multiple things that are already available on the net. So I'll give a brief introduction for the August audience who might have been connected across the globe. Mr. Jose Manuel Noronha has served as the chairman of the Goa Public Service Commission, overseeing civil service appointments and promoting administrative reforms in Goa. And he is also the chairman of the Goa State Innovation Council. So, sir, you are a personality who has done a lot of work in different fields. I am not elaborating on that, but in the meantime, sir, today is the day when audience and myself is willing to hear from you the climate practices that you have been, conducting on your own, and by doing doing that, you have been influencing the activities, the climate individual level climate actions by the citizens. So, sir, please you share your own experiences. Yeah, sure. Thank you. Am I audible to you? Yes, sir. Perfect, sir. Okay. Perfect. Thank you. At the outset, my sincere appreciation to Dr. Nikhil Kant for having taken this very yeoman service that you're doing. Climate change is real. It is happening, so we have to take note of it. And events like how you conduct are really going to take us a long way. I was earlier the chairman of State Pollution Control Board. I helped in granting EC. So my pulse is on the environment and the climate change practices here. I was listening just now to Professor Patnaik, Dr. Patnaik, and many of the practices that he follows, I too follow, like about reducing our carbon footprint by reducing the air conditioning that we use, the power we use. But I'd like to share with the August audience that climate change was actually predicted by a Swedish scientist in 1896. It's almost 130 years back when he spoke that carbon dioxide emissions in atmosphere is going to create this kind of a condition. Almost 130 years back. Yet we have done nothing about it for 130 years. People are reacting very slowly. The state that I come from, climate change, if it's impacted, Goa will be one of the states that will be, because we are a coastal state like Orissa, for example. Now, the point is that what do we do?
I, for one, am also the chairman of a school. It's a Manavikas public charitable trust that runs a school. We have about 2,200 children who are in school, and we generate almost 2 tons of waste, that is only the dry waste, every month. So we have engaged a body called Saha Zero Waste from Bangalore. They collect the waste, they characterize it, they segregate it, they send it for recycling, and we bring it to the attention of students that, see the type of waste that you're creating: shoes, clothes, textbooks that could be used, could be recycled. And we really encourage them that it's rather than creating this waste and buying a new product, try to see whether you can reuse it. If not reuse it, try to recycle it and give it to people who really require this type of waste. So this is one effort that we have done. The other one is about the wet waste. We have a proper composting pits where we compost waste rather than sending to the municipal bodies. Although I may just like to add here that as a school, we have all the right to that the municipal body collects our waste and processes it, but we rather do it ourselves. So the youngsters, the children, the 2,200 children who are in school are made aware of how waste is treated, how waste is segregated, how waste could be recycled. And this is another learning opportunity for them to understand that they also have to contribute to preventing this climate change from taking place. Another effort that this is from the work from the professional point of view. From the home part, like Dr. Patnaik was saying, that about reducing the usage of air conditioning, or powers, or light, or fuel for vehicles. We walk when we can walk. We also have a place called a Kamba, which I think many people in villages in India have, where we can compost our wet waste that we have. The wet waste is used there and then subsequently used as compost in our gardens. This, in many ways, will help the reduction of generation of methane, which is one of the major contributors to the greenhouse gas, which is affecting the climate change because of the rise in temperatures. I have tried to outline the few practices. I know we are running short of time. I will not like to prolong this because many of us have to speak. Many of us probably will share the same kind of experiences again and again because we are all living in a similar type of environment. But I am very fortunate to be invited by by Dr. Nikhil Kant for this very momentous. I am grateful because 5th June is a good day to have this program. My sincere greeting that God grants eternal rest to your honorable mother, that she has passed away. I'm sorry to hear that. But my best wishes for this program, so it will continue year after year. Thank you and God bless. Thank you, sir, for motivating all the August audience, including me. And also, in a very short period of time, you not only acceded to our request, but also you made sure that you are here with the right way of the content in your statement, sir. And really, it has encouraged us a lot. And we are looking forward to having you in more such programs in future. And also, when Sure. I happen to be in Goa, or if you happen to be in Delhi, we will be getting guided by you, sir. So thank Yes, you very much, absolutely. sir. Thank you, sir. Absolutely. Sir, in the Thank you. meantime, sir, I would request, yes, sir. In the meantime, I would request you for unveiling of one of the initiative that we are going to do today. This is Sure. VNP, sir. This is VNPH music, sir. With your permission, we are going to unveil. Absolutely. Sure. So thank you, sir, for your precious word. And now is the time to invite our next guest, sir. And our next guest is Mr. Emerson Descende. I would request now Mr. Pius, the CEO of Wij Sharks, and is also also the ex officio chairman of the VNPH Foundation. He has been a climate conscious CEO. I am talking about Kumar Pius. He has been a climate conscious CEO, and that is simply reflected in the thing that he just decided to adopt this entire concept of Vishwa Nishane par hai, and because of him, the VNPH Foundation came into existence. So I request Kumar Pius to please give introduction of Mr. Emerson Desande, and then after we'll be hearing from him. Pius, please.
Use your Yeah. yeah. Thank you, Dr. Nikhil Kant. It's my privilege to introduce one of our esteemed guests today, Mr. Emerson Resende. Yeah. Mr. Emerson Resende is Thank founder you, of Dr. Zenolife. Nikhil. It's He my leads privilege to introduce one of our esteemed guests today, Mr. Emerson Resende. Mr. Emerson Resende is founder of Zenolife Plant. He leads initiatives inspired by Stoic philosophy of empower individuals, especially children from vulnerable communities, towards personal growth. With more than 15 years of service at United Nations, Green Climate Fund, GIZ, and KPMG. Welcome once again, Mr. Emerson Resende. Nations, Green Climate Fund, GIZ, and KPMG. Welcome once again, Mr. Emerson Resende. So, Mr. Resende, I request Afternoon, you good to evening. share your I personal hope you can hear me initiative. well. Can you? Yeah, we can hear Yeah. you. Okay. I'm very, very pleased to be here today with you. It's truly an honor to be part of Vishwa Nishane Parhai. India has a special place in my heart. I have visited the country for the first time almost 20 years ago, and I have many Indian friends, and being here with this community just reinforces the values, reinforces the connections, and reinforces the common vision for us to make this place a better place for all of us. I want to start by expressing my deep admiration and thanks to Dr. Kant and all the team behind this wonderful initiative, and for all these incredible speakers that have come before me here today as well. So I'm really honored to be here today. So let me share a little bit of my own journey that got me to work with climate change and be where I am today. My own journey began in the sands of Brazil when I was a kid, selling peanuts at the beach. Many years later, after studying, after pursuing a bachelor's, a master's, I fulfilled the dream of mine by starting to work at the United Nations with climate change, climate policy, climate finance, managing projects and programs, delivering solutions for millions of people in vulnerable parts of the world, from the Caribbean to Africa to Asia. And I have done that for 15 years, working with UN, working with cooperation agencies, working with financial institutions. And I felt one thing was missing in that journey of mine. I was always working with institutions, helping institutions to change, to deliver solutions for people on the ground. But working with institutions, it requires a lot of muscle work and patience, because we work with people that are representatives of governments, and the machines of governments, they move at a certain speed, not necessarily the speeds that sometimes we want to see the change for those most vulnerable. So despite the progress that I was making in my career, making with my work, I wanted to work with individuals. I kept meeting individuals in my career, leaders, students, parents, people that who felt lost in their own lives, people that would ask me, what can I do to feel that I'm contributing for climate action? So that realization that led me to create Zenolife Plan. I really invite you to check zenolifeplan.com. It's a mentoring method that I established, rooted in Stoicism, the Greek philosophy, and Vipassana. I believe many of you are familiar with Vipassana meditation. I'm a practitioner, and these methodologies that I developed to mentor people are these methodologies rooted in Vipassana meditation and in Stoicism. And why is that? And what's the connection to climate action? I truly believe that for us to make it a better place, make this planet a better place, we have to really live, we have to really embrace what we want to see. We want to take this to our own life, and we need to develop clarity about our own life to be able to take this forward to more people. So today, I'm not just here as a former UN strategist or a climate change finance officer. I'm here as someone that has gone through my own challenges to develop clarity on how I can impact
people's life and make this planet a better place for me and for everybody around me. Because I believe that true transformation begins within. So this is my message. I invite everybody to dive deep inside each one of us to find what is true and live that truth we want to see in the world from our own actions. As many of the speakers spoke before me, from turning off the lights when you leave a room, closing the tap when you're brushing your teeth, but going way beyond that, going into voting consciously on leaders that represents the values and principles that I embrace, leaders that will embrace the flag for making this planet a cleaner, safer, more just planet for all of us. Thank you all for this opportunity and congratulations for this wonderful initiative. Thank you, Emerson Resende, for For this wonderful having initiative. accepted our invitation and being here. You have been very active since we got connected with each other, and you just tried to make sure that this platform is going to give an opportunity for all of us to get encouraged by whatever you are going to share with us. So really, we are very much thankful. And VNPH, since the chairman of VNPH Foundation, Kumar Pius, he himself is the climate conscious CEO. He was the CEO of Infopine, and now he is the CEO of VSAT. So I would request him also to say a few words, because coincidentally, he simply thought that he would be giving the vote of thanks. But it's our privilege that two of the CEOs are here. So I would request Kumar Pius also to share a few words. Thank you, Dr. Kant. As a CEO who believes in responsible leadership, I have always felt that businesses and their leaders must go beyond profits to serve a larger planetary purpose. Climate crisis is not just an environment issue; it's a human, economic, and moral crisis. So, as a business leaders, we are in a unique position to amplify impact, mobilize communities, and support meaningful initiatives. That is why I felt a deep sense of connection when I first came across Vishwa Nishane Par Hai Climate Crisis Awareness Campaign, founded in 2004 by climate practitioner and poetic climatologist Dr. Nikhil Kant. His powerful Hindi poems didn't just speak of climate crisis; they moved me. They brought the crisis closer to the heart, making me reflect not just as a professional, but as a citizen and a fellow inhabitant of this planet. What struck me most was the campaign's simplicity and sincerity. VNP doesn't dictate action, it celebrates it. Like we are celebrating today with all of you, what all you have been practicing. So it doesn't dictate action, but it celebrates what we are doing on daily lives to support climate awareness, right? It empowers individuals by encouraging them to share the small conscious step they have already taken for sustainability. Through poetry, music, and storytelling, it creates an emotional bridge between awareness and action. It realizes that campaign like this, so genuine, so people driven, deserves a structured support to scale. That's when I decided to adopt the campaign through VNPH Foundation, which is now in existence. Uh, and I got a privilege of chairing this VNPH Foundation. As a climate conscious CEO, my role is to ensure that the vision behind VNPH reaches the widest audience possible, remains intellectually protected, and evolves with integrity. And we are taking a lot of steps. We are structuring it now. Though the VNPH Foundation, we aim to provide a formal platform to climate conscious storytelling, like we all are sharing today, support content creation, outreach, and resource development, and protect the campaign's copyrights, which is obviously through Mr. Nikhil Kant is with VNPH Foundation, the founder of this campaign, and creative identity in service of its founder and purpose. Enable collaborations, events, and innovations that carry VNPH spirit forward. So, just to summarize, VNPH is not just a campaign; it's a catalyst. And I believe that when business leaders join hands with such citizen-led movements like
Mr. Emerson is doing a lot of work towards it. Real transformation becomes possible. So I invite all my fellow professionals who are here with us today, or who will be joining us in future. All of you who are who is watching this event, entrepreneurs and change makers, to support and simplify campaign like VNPH. Let us use our platform not just to grow, but to give back to the planet and to the generations yet to come. So thank you all for joining, and thank you all for becoming part of VNPH Foundation. Thank you, Dr. Kant. I take this opportunity to request Emerson for unveiling one of the initiative today, and that is VNPH storytelling. So I seek your permission, and I just try and get it unveiled. Unveiling one of the initiative today, and that is VNPH storytelling. So I seek your permission and So thank you very much. Now is the time to invite our next guest, and he is really waiting for some time now. So I request Raj Yogi Brahma. Now is the time to invite our next guest, and yes. नमस्कार. नमस्कार. तो बिफोर इसके पहले कि मैं आपको सर मौका दूं, सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका मैं दे दूं, ताकि हमारे ऑगस्ट ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके बारे में जान सके। और निश्चित रूप से सबके पास समय की कमी है, तो आपके पास भी और हमारे ऑडियंस के पास भी। और आज बहुत अच्छा मौका है कि हम आपसे आपके क्लाइमेट प्रैक्टिसेस के बारे में सुनते हुए गाइडेंस लेंगे। राजयोगी Brahma Kumar Nikunji is a young, dynamic leader of the Brahma Kumaris who has dedicated his life towards self and world transformation. He is a renowned spiritual author and global speaker, known for integrated spirituality with practical wisdom to address contemporary life challenges. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑडियंस जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे सुने, और हम सभी गाइडेड हुआ। सबको पहले मेरी तरफ से ये तो अंग्रेजी में बोलना है, हिंदी में बोलना है? आप सर जैसे जैसे चाहते हो, हमारा ऑडियंस दोनों तरह का है, और जैसे आप प्रेफर करते हो। तो first of all, many congratulations for completing 21 years of creating enlightenment and awareness to Dr. Nikhil Kant and his team. इतना आसान नहीं है, पहले तो खुद जागृत होना और उसके बाद अनेक सोए हुए लोगों को जगाना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि लोग अक्सर करके समझते हैं पहले वो, परंतु पहले मैं, ये सोचने वाले इस संसार में बहुत कम है। तो पहले मैं जिसने किया, उन्होंने क्रांति की, तब जा करके आज विश्व के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो पाएंगी। तो इसीलिए ये जो टाइटल है विश्व निशाने पर है, ये बड़ा सटीक है, परंतु किसके निशाने पर? Who is actually targeting whom? That is $1 million question. Looking at what is happening around us is that we humans are targeting ourselves. There is nobody else who is targeting us, but we human species are now targeting ourselves based on our own karma. I just came from an event of Environmental Day where I was gifted this sapling. वहाँ पे मैंने एक ही चीज बोली, in India we consider environment, nature as mother. हम कहते हैं माँ प्रकृति, and we offer our prayers to Mother Nature daily. Just imagine if a child, out of his greed, if a child, out of his expansionist attitude, just imagine for a second that someone like your mother, if her body is drilled by drilling machines all over the body, how would it look?
That's what we have done today. Everywhere, literally everywhere, we want to construct. झाड़ निकालो मकान बनाओ. In the name of development, we are completely we are destroying something out of which we all have come. हम तो प्रकृति की उपज है. All of us, when we are going to die, 6 फुट का आदमी, he or she, they would be in one small pot, जिसको हम अस्थि कहते हैं. In English it is called ashes, जिसको हम जल में प्रवाहित कर देते. When we all know from where we have come, from where we have to go, and yet in spite of this knowing, we want to turn a blind eye. We want to, we just want to be so cruel. हम अपना फायदा देखना चाहते हैं और धड़ाधड़ जंगल खत्म कर रहे. I was invited by government of India for an event for reviving jungles, for reviving rivers. Where are jungles? There are no jungles. So I think in the name of development, we have forgot a lot of things. Sustainable development goals with the United Nations, they had come on with sustainable goals, but who is following? So many times, because I am a writer, I have written more than 9,000 columns. Many times I laugh at something called renewable energy. What is renewable energy? Look, my dear friends, humans, they are not learning to live their life with less and less, but instead they are trying to find out more and more wherein, they can enjoy their life, and they are giving it name of renewable energy. Today, if you see at the kind of research that's been happening in West as far as solar panels are concerned, you would be shocked. तो बजाय इसके कि हम कम के साथ जीना सीखे, our forefathers, they lived without lights and yet they were happy. But आज हमारे पास एसी है, नए प्रकार के एलईडी बल्ब है, सब कुछ है, बट हम सुखी नहीं है. क्यों? बिकॉज समवेयर डीप विदिन हम लोगों ने प्रकृति को कहाँ ना कहाँ दुखी किया. समवेयर वी हैव गिवन सॉरो टू आवर मदर अर्थ, टू आवर मदर नेचर. अभी माँ कितना सहन करेगी भाई? बच्चा जो होता है शरारत करता है तो थोड़ा ठीक है, चलो भाई समझा बुझा के, बट अब बच्चा शैतानी पे शैतानी कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है. Then the whole balancing act in the form of disasters which we see everywhere is happening. It is nothing but wrath of Mother Nature. Continuous exploitation of someone, how much someone will tolerate. And that is why this whole balancing all over the world is happening. You would see somewhere there are extreme rains, somewhere there is extreme heat. क्यों हो रहा है? ये संतुलन बन रहा है. तो इसीलिए इतना ही कहूँगा कि जितना है उसके साथ जीना सीखिए. और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस लालसा में हम ये भूल रहे हैं जिस पेड़ पे हम बैठे हैं जी रहे, उसी की टहनी काट के हम खुद ही खुद को गिराने का काम कर रहे हैं. तो ऐसा मूर्खता ना करें. मेरा तो यही अनुरोध है सबसे. देखिए, आज बहुतों ने सब वो झाड़ लगाने के नाम पे वो फोटो निकाले रहेंगे सबने गमला पकड़ के. अरे बाबा, फोटो निकालने से नहीं होता है. झाड़ जो है, वृक्ष जो, वो भी बच्चा है. आपने बच्चा पैदा किया है जिसने, उसको बड़ा करना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसको प्यार देना पड़ता है, दुलार देना पड़ता है, तब जा करके वो बड़ा होगा, आपको छांव देगा. तो फोटो नहीं निकालना है, परंतु जो भी देख रहे, everyone around who is watching this, just take a small pledge, not a big one. Just take responsibility of one tree. एक खाली. I don't think it's a very big deal. Neither it is expensive. एक झाड़ का जवाबदारी ले, मुझे एक झाड़ लगाना, उसको बड़ा करना. तो मैं समझता हूँ इससे काफी परिवर्तन आएगा.
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती शब्दों के लिए, और आपने समय दिया। मुझे मालूम है कि आज आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और आपके लिए एक बड़ा छोटा सा विंडो था जिसमें आपने अपना समय दिया था। हमने उसको भी क्रॉस किया, लेकिन जब हम इस तरह से बात करते हैं, अपने कर्मों की बात करते हैं और दूसरे को इस प्लेटफॉर्म पे आके दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो समय का पता नहीं चलता है। और वास्तव में मुझे एक अपना बहुत पुराना सा शेर याद आ रहा है कि कुदरत ने क्या खूब बनाई कई चीजें अचरज वाली, फुर्सत नहीं सांस लेने की फिर भी पूरा जिंदा हूँ। तो सांस लेने के लिए प्रकृति ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है कि हम उसके लिए फुर्सत निकाले। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं कि फुर्सत नहीं है सांस लेने के लिए भी। अगर फुर्सत लेनी पड़ती सांस लेने के लिए तो हम बिल्कुल फुर्सत में ही होते। इसके पहले कि हम आपको यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाएं, जाने देने के लिए तैयार हो जाएं, एक छोटी सी विनती है कि आपसे एक हमारे इनिशिएटिव को अनवेल कराएंगे आपके परमिशन से, और वो है VNPH टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मौका मिलेगा, हम आपसे आपकी बातों से लाभान्वित होते रहेंगे और काफी कुछ सुनने और समझने और जानने का मौका मिलता रहेगा। ये पहली बार शुरुआत है हमारे फोरम में, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसे हजारों हमारे पास ऐसे मौके आते रहेंगे जब आपका समय मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है हमारे पास एक अगर रिधिमा पांडे जी आ गई हैं। यस, रिधिमा पांडे जी के बारे में लगभग मुझे लगता है सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि ये भारत के लिए ग्रेटा थेनबर्ग हैं, और हम जैसे लोग भी, हमारे लिए तो बहुत ही बच्ची जैसी है, लेकिन कारनामे इनके बहुत ही बड़े-बड़े हैं। और तबीयत अभी इनकी ठीक नहीं थी, फिर भी आज के लिए उन्होंने समय निकाला है, और मेरे हिसाब से इनकी उम्र भी अभी 20 साल मुश्किल से होगी या 20 से कम ही होगी। मैं थोड़ा-सा इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ताकि दर्शक और जिज्ञासा से जानने की कोशिश करें कि कैसे छोटी उम्र में भी बड़े-बड़े काम इस तरह से किए जा सकते हैं कि ये लगे कि बहुत ही छोटा काम है। और इन्होंने ऐसे बड़े-बड़े काम किए हैं जो सच में हम लोग के लिए भी छोटा लगने लगता है। चलो ये जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और हमारा विश्व निशाने पर है कैंपेन में भी हम यही दिखाना चाहते हैं कि जब हम ये बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि अगर निखिल कांत कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह की हस्ती हैं रिधिमा पांडे जी। बहुत लोग को जिज्ञासा रहती है उनके बारे में जानने के लिए, आज वो हमारे साथ हैं। मिस रिधिमा पांडे इज ऑफ around 17-18 years. She is a climate activist, and she has mentioned in this BBC 100 most influential women list 2020. She has been a part of the Disney Hotstar series One for Change season 3 by National Geographic Channel. She has been featured in BBC, NBC, Vogue, LA, Harper Bazaar, and a prominent voice in the International Climate Forum. इससे ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर शायद समय हमारे पास नहीं बचेगा दूसरों को सुनने के लिए या उनको भी सुनने के लिए। रिधिमा जी, आपका स्वागत है, और आप अपने क्लाइमेट प्रैक्टिसेज इस प्लेटफॉर्म पे साझा करें ताकि लोग आपसे इनकरेज हो, मोटिवेटेड हो, और उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाए, जैसे हमारी जिंदगी भी इसी प्रयास में अच्छी होती जाती है। शायद अभी कुछ कनेक्टिविटी की परेशानी है उनके साथ, तो मैं हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनके बारे में एक परिचय देता हूं और उन्हें इनवाइट करता हूं। प्रोफेसर दिलीप एम, वो अभी वाइस चांसलर हैं। और रिधिमा जी आ गई हैं क्या? अभी उनके साथ परेशानी है कुछ, वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो प्रोफेसर दिलीप कुमार एम जो है वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, अगर उनको स्क्रीन पे लाया जा सके। यस, Professor Dilip Kumar M is a visionary academic leader and Vice Chancellor of Hansard University in Nigeria, committed to advancing higher education and fostering academic excellence. Sir, आपका स्वागत है, and if I really am not aware whether you understand Hindi or not,
But this is a program where we have been conducting this program in Hindi and English, because it's a global program, and basically we have been associated with the Indian diaspora as well. So, I mean, now it's the time to invite you to share your own experiences. And after that, when the connectivity is there, the connections is right for Ridhima Pandeji, we would be hearing her. Thank you, Dr. Nikhil Kant. Thanks for the invite. And this program is literally amazing. I'm very far, but still, you have considered me to have a word with the audience and to give some messages connected to my African continent, specifically because so many people are talking about philosophies, the poetic models, but I'm into hardcore business management, into the category of finance and strategies and likewise. So I'm trying to share my 5 years in Africa now, and issues with which I would like to share some. In the same time, I would like to take this platform to a certain area where the climate organizations can focus into, or the people who would like to get the finance, they're struggling for finance, can move towards certain platform with which the organizations can move well. So if you ask me about the African scenario, it's one of the worst affected areas of climate change, especially the place I'm coming from, Bielsa State. Every year is happening. Dislocations of or of people and extreme degraded conditions in Africa. And you may be remembering a lot years with which people have killed. Maybe take an example, 2022, you take into consideration. 1.3 million people have affected this particular issue, the climate issue, with the flood issues and likewise. And major issue this particular region, the Bielsa region, facing is oil spillage. You know that the best of companies like Shell or any kind of companies, international oil companies, they are all having companies over here. And they're exactly looting the community. Especially you take into consideration of Bodo community in Africa. This community is facing extreme problem of oil spillage against, but this Shell company has come down, start work, and finally extreme oil spillage happened, in which entire community affected, and almost around kilometers you can see only oil, and everybody had to be displaced. Places like Onisha, places like Kaduna, places like Aba, every region taken into consideration, it is affected. So major issues they are exactly facing, like rise of flooding and especially Niger region and likewise. But my message to you people is not connected with that. My message is connected with climate resilience. The most important thing is how we move about after this what, how we can manage. So like ecosystem restorations or early warning systems or community-based adaptations or sustainable agriculture practices, or a lot. It's not just one area we have to focus into. So the most important aspect is building climate resilience for the economies. And what kind of interventions we can make with the support of finance or government interventions. You might have heard about the venture capitals and private equities that can support in strengthening the natural systems, diversifying the supply chains, infrastructure development, fostering communities, and likewise. You look into parametric insurance process, fast and pre-agreed payouts based on the specific climate triggers and likewise, either rainfall or wind speed and likewise. Another product, bonds and loans, scaling up the resilience and likewise, relatively low-cost finance can support the organization to engage into climate finance activities, climate mitigation, climate-related issues, and mitigation of that challenges and likewise. Another, ecosystem credits, carbon diversity, where resilient credits possible. Generate revenue by quantifying
as well as monetizing the environmental services, especially carbon footages and flood productions and likewise. Another, syndication platforms you can generate into that. Co-financing is exactly the more options coming for organizations engaged into the climate mitigation activities, climate issues and challenges with mitigation activities. So they're accessible to many investors, and they come and they are supporting to the small organizations and small financiers to pump towards this project and likewise. Impact bonds repayment is based on how the investors are repaying. So impact bonds also available. So a lot of options are available to mitigate the climate, and it is practiced in Africa. Specifically take into consideration public-private partnerships, exactly. Co-financing deliver these adaptation projects and likewise. And they're trying to club it. Special purpose vehicles are they supporting that particular coastal areas, and like a special purpose vehicles in finance term it is coming up. Pool funds, concessional debates, innovative financing models like what you would say philanthropic capital, public-private, all available. Specifically take into consideration one of the finance area, the climate mitigation people are engaged into is microfinance, and they are providing the loan facilities, financial services to individuals and small businesses that lack access to traditional finance options and likewise. If you take into consideration of all this, I'm telling you, many financial parameters available. We are all talking too much about the impact, and we are not talking about resilient measures. Resilient measures need people, need the projects require the finance. So in addition to these activities, also the government mechanism also. Take an example, land revenue or a land value capture. Taxing the increase in the property value from the public investments, like such as what you would say flood defenses or green infrastructures and likewise. Results-based financing also is another factor. And last but not least, the price support mechanisms. A guarantee, a kind of minimum return for resilience-related goods, services, and likewise, such as maybe climate resilient crops in agriculture, water efficient technologies, and likewise. So if you take into consideration, a lot of government mechanisms as well as private mechanisms are available to mitigate the impact of the climate change. And we are all discussing these aspects into a particular day, a special day. And it's very much encouraging to be part of this movement, connected with financial options and likewise. But this is really a kind of productive development of resilient economy. I wish you this particular event an amazing opportunity to reach up to the millions of people, as well as best of coordinated efforts towards the mitigation of the climate change. Thank you so much, Dr. Nikhil Kant, Dr. Piyush, and all the team of the organization inviting me, even though I'm very far. It's my pleasure to be part of you. Thank you so much. God bless you a lot. So it's our pleasure to have you over here, and you really touched upon all those aspects that we needed to know, especially coming from that background of the African continent or subcontinent. We are not different in this, the locality and the ecosystem that we are in. So everyone needs to be proactive. Like we always say in our foundation activities, that reactivity leads to reluctance and acceptance leads to proactivity. So in that sense, we have always been trying to share our own experiences in the form of poetry, in the form of storytelling, or in the form of this music, or any form of visual or performing arts, for sharing our own proactive personal practices. These practices might be small, but again, they really motivate others. So before before you leave from this program, I would request you to permit us for unveiling one of the initiatives, sir. So this one is VNPH vlog, and with your permission, VNPH is going to
unveil this. Yeah. So thank you very much, sir. And now we are waiting for perhaps the technical issue that Ridhima Pandey was coming across. She must have been clear for that. And can Ridhima Pandey be brought on screen, please? Hi, sir. Sorry for going off in the middle. I'm actually traveling right now. I'm on road, so my network is not the best, and that's why I've kept my camera off as well, just so that No, you can hear me. Yeah. Yeah. So please share your practices. You have been doing a wonderful job, and all for the purpose of a better life for not only this generation but future generation as well. So we are really very curious and keen to hear from you. Please speak. Thank you so much, sir. So for me, I would say everybody has told us many options in terms of whether I was hearing, whether it's about switching off the lights or closing the taps while brushing or doing and taking other measures. And I think all of these actions for me come under one word, that is awareness. And that has been one of the most important key factors for me throughout my journey. Creating awareness among people, among young children specifically, about what climate change is, what they need to do as a individual, and how their action matters. Along with, I would say, being an activist, working on ground, most important thing for us has been doing campaigns where we mobilize people to bring change. Um, and I think doing these things, and apart from this, giving your best in whatever topic that you choose to work on, whether it be climate change or anything else. And today on World Environment Day, this World Environment Day theme has been beating plastic pollution, and we all know how big of a plastic pollution problem plastic pollution has been, not only around the world but in India as well. Whether it's segregating the waste properly or disseminating it as well. We can start from today by just segregating our waste properly, and ensuring that we are not contributing to plastic waste as well. And it's very easy to beat plastic pollution from your life. I mean, I carry a water bottle and a bag with me wherever I go, and it's not as heavy as people think. And by thinking that our bottles might be heavy and buying plastic as conveniently as we do today, we're creating a huge burden on this planet. So I would just say to the people, one of the sayings of Gandhiji that I live by, that is, be the change you want to see in the world. And yeah, I mean, if we really dream to achieve something, and if we really believe in ourselves, we can do anything. And yes, thank you so much for listening to me. Thank you very much, Ridhima, and it was really pleasure and motivating to hear from you. Obviously, if you are still available, we would request you to unveil one of the initiatives. And actually, every year we have been unveiling one of the documentaries. So this year we have one documentary, that is VNPH Panorama, and we would request that with the permission of yours, we would unveil this documentary, and that would be available in public domain from today itself. Absolutely, sir. Absolutely. And one more thing is that we have still not been able to, be satisfied with your, presence over here. So we would request that on this forum, on this platform, you would be coming once again. So that's our absolutely, sir. Absolutely. Once again with cameras on. Yeah, not only for camera. Actually, we have been working on the ground, and these media, social media, and this kind of event are only extension of that particular thing, because we have our limited resources. We cannot reach out to each and every person, and we are not going to preach. We are not going to prescribe. We are not going to propose. Actually, we are just willing to share our own experiences in such a way that it becomes motivating for others also, because they would simply think that, okay, if this person is doing this, I would also be able to do this.
So this is an extension, and obviously your presence would be motivating a lot of people. So I again request that in future, very recent future, we would be coming again on our forum. Absolutely, sir. Yeah. So with your permission, we are going to unveil this VNPH panorama, and this is a documentary. Last year we had unveiled a documentary on Uttarakhand forest fire, and that was made by one Saptarshi Majumdar, an alumni of TERI, and he worked for environmental issues in New Zealand for 5 or 6 years. This year we have come out with this VNPH panorama, and at the end of this program, we would be also showcasing that. So this is only curtain raiser just now, and in the end we would be doing that. So this is VNPH panorama. विश्वा निशाने पर है a climate awakening. So thank you very much, Ridhima, and we hope that you get well very soon, and we would be able to have your appearance once more. Thank you very much. Absolutely, sir. Thank you so much. So now is the time to request a very prominent figure, and he is just, he's joined for some time now, Mr. Tej Pratap Narayan ji. Tej sir, can you please, yes. Now you are visual, sir, and before you speak, sir, we request you to speak about your own climate practices. We have been knowing about you for long, and now today is the time, that particular time has come when you would be sharing the, your own practices with the august audience across the globe. So before that, I would like to give a very small, brief introduction of yourself. Mr. Tej Pratap Narayan ji is a senior government officer serving as an officer on special duty at the Railway Board, Indian Railways, and has been contributing to the strategic planning and modernization initiatives. This is something very, very small introduction, because the real introduction will be coming from what sir is going to speak. Sir, please. Thank you, Nikhil ji. मेरी आवाज आ रही है? Yes, बिल्कुल sir. Perfect. Good evening, everyone. And I should congratulate Dr. Nikhil Kant for taking this initiative, which is kind of very important and critical for the existence of Mother Nature, our Earth. So, as far as I am concerned, I feel to mitigate the climate crisis or the issue of environmental things, we need to act upon different level, right, from individual to societal, family, and government level, basically. Like, for example, what I feel that that the feeling of ownership which we are having, that we feel that we own this land or we own a house. So this feeling of ownership should go, and we should have a feeling of trusteeship. We should just feel that we are guardian of land, guardian of water, guardian of every drop of water, guardian of everything, basically. So once this feeling of ownership is replaced by guardianship, all conflicts which are going on for different reasons will stop. So no change can be permanent unless it is done at heart level. If the change is not done at very a deep level, deeply in your heart, that change doesn't sustain. It just makes few changes, some slight changes, some small changes will happen, and finally, what will happen? The same thing will exist again. So this is my request to everyone who is listening to just have this feeling of trusteeship, guardianship for nature, for water, for energy, for air. Though we are part of this nature, and we are son of this mother nature. We are just creation of this nature. But as a son of this nature, as a daughter of this nature, it's our duty to contribute, to help this mother nature sustain, and that you should have that feeling of live and let live. Once that feeling comes, then everything will vanish. So we need to follow a famous saying of Buddha, that middle path.
see everything. If you just analyze the location of Earth in our solar system, had Earth been closer to Sun, it would have been very hot, and there would not have been any existence of life. Had it been slightly farther from the Sun, it will be a Mars. Again, there was no life. No life could have sustained. So middle path is the way where we can. This is the way where by walking on this path we can sustain this nature, this earth, and everybody out of here. So small is big steps. So small changes in our daily lifestyle can help a big way. For example, if you are living at second floor or third floor, so instead of using lift, if you go by stairs, so two things will happen. On one hand, you will be saving maybe few maybe 10 watts of energy. At the same time, you are exercising also. You are able to exercise yourself. You are able to energize your body, and you are utilizing your time also. So like this, small steps we can definitely follow. And if I'm having my birthday, I can simply go and plant a tree instead of having party. I can go and plant a tree. If all individuals, all citizens of this country, of this earth, starts doing this thing only, that planting a tree on each and their birthday, so that will kind of it will definitely help having more plants on this. Similarly, if some of our nearer dear dies or is no more, we can just plant a tree in the memory of that person, and we can just simply keep watering that plant in that memory as if you are doing service of that dear one, and we just can make that plant grow. So like these kind of initiative will definitely help us this nation and this earth to survive. Further, as an organization level, since I work in Indian Railways has a very good plan to mitigate this climate issue. For example, we have a mission net 2030, and as per that mission, we just want to uh, create a situation or reach to a point where we want that we should have net zero emission by 2030. So we are going in a big way for uh, green energy. Like we are planning to have 40% of the energy as a green energy, and we have planned that by 2030 we'll have 30 gigawatt of solar and wind plant. So as an organization, also we should try to uh, adopt those practices which are sustainable in nature. If we are not using our computer, we can switch off computer. If we are not using our mobile, we can just put this our net off. So these small measures, maybe it may be saving 0.100 maybe watt of energy, but 0.100 multiplied by 140 crores, it will be a kind of a megawatt. So these are small things what I feel that is required to be done because everybody waits that somebody else will take steps, somebody else will take measures. So that will not help. So it's our duty as an individual. As an individual, we are universe actually. It is not basically like I say that I'm an individual. I'm not an individual. I represent the complete universe. I represent the complete earth, complete humanity. So we have to think in that way. Once we start thinking in that way, there will be feeling of brotherhood. There will be feeling of fraternity. We'll start thinking about others. So, but that everything will start from our oneself, because we say that charity begins at home. So instead of teaching others, we should start from our side, and we should be kind to ourselves. Once we are kind to ourselves, means we will not do anything which is harming to our brothers, our sisters on this earth, and we should feel grateful towards everyone, towards this nature, towards the air, towards the trees, towards which
towards also. That's it from my side. Thank you very much. Thank you, sir, for your not only you gave us a lot of time, but in the meantime, you gave a different dimension to the entire narrative. So, sir, we are still waiting for one or two guests. In the meantime, what I thought that there are a few young and kids and students are there who have created 2 or 3 minutes appeal for joining Vishwa Nishane par hai. So I'll be running that video for 1 or 2 minutes. After that, we'll request you to give us permission to unveil one of the initiatives. Sure, Nikhil. Yeah. जुड़ गई रहुआ कब जुड़ब याद रखिए विश्व निशाने पर है। मैंने तो हाथ मिला लिए हैं, लेकिन क्या आपने विश्व निशाने पर है। फुटकाई हाथ में डाला आणि तुम्ही फुटकाच दमन गया विश्व निशाने पर है। मैं हाथ मिलाव्या छे તમે યાદ રાખો વિશ્વ નિશાના પર છે। आम्ही हात मिलावे छे की तुम्ही मिलाय છો મોય રાખો વિશ્વ નિશાને ત્યાં છે। I have joined hands. Have you remember विश्व निशाने पे है। મારે હાથ જોડ્યા છે તમે જોડ્યા છે યાદ રાખો વિશ્વ નિશાને પર છે। હું હાથ મિલાયો એ હાથ મિલાયો કઈ ધ્યાન રાખજો વિશ્વ નિશાનો પર। आम्ही हाथ मिलाय छे तुम्ही मोने देखो विश्व निशाने पर आज। I have joined hands. Have you? మేమైతే చేతులు కలిపాం మమ్మల్ని మీరు కలిపారా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచం లక్ష్యంలో ఉంది। యానంతు కై జోడ్సే నిగ్లు జోడ్సాయరా नेने पिपड़ ये लोग का बुरी तमित। हम हाथ मिला चुके हैं क्या आपने मिलाया याद रहे विश्व निशाने पर है। હું હાથ જોડું તમે મન રખ વિશ્વ ચિહ્ન પર अछि। I joined hands. Have you remember विश्व निशाने पर है। मैं इस मुहिम ਨਾਲ जुड़ चुका हूं कि तुसी भी याद रखो विश्व निशाने ते। ମୁଁ ଏ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆପଣମାନେ ଦେଲେନି କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ विश्व निशाने पे है। हवे जॉइन केला आणि तुम्ही रिमेंबर विश्वा निशाने पर है। दगड़ियों मैं अपन दोनों हाथ जोड़ रखी अपन विश्व निशान पर छू तू तेको ध्यान दरिया मैं मेरे तो अटी पहला अभियान रे जगह डेलीनी अपन माने डेलीनी की मने रखंतु विश्व निशाने पर है। याद रखो विश्व निशाने पर है। कई सेंड ट्रेनिंग है ना गुस्कोंगे विश्व निशाने पर है। నేను చేతులు కలిపాను మరి మీరు గుర్తుంచుకోండి విశ్వ నిశానే पर है। आम्ही तो हाथ मिलियची और आपनी నేను చేతులు కలిపాను మరి మీరు కలిపారా గుర్తుంచుకోండి విశ్వ నిశానే पर है। ഞങ്ങളും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നിങ്ങളോ ഓർക്കുക വിശ്വ നിശാനെ पर है। I have joined hands. Have you remember विश्व निशान पर है। मैले हात मिलाए कि तपाईले मिलाउनु भयो सम्झनुहोस् विश्व निशाने पर है। నేను చేతులు కలిపాను మీరు చేతులు కలిపారా గుర్తుంచుకోండి విశ్వ నిశాని पर है। मैले हात मिलाए के तपाईले मिलाउनु भयो सम्झनुहोस् विश्व निशाने पे है। మేము చేతులు కలిపాము మీరు కలిపారా గుర్తుంచుకోండి విశ్వ నిశానే पर है। ഞങ്ങളും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു നിങ്ങളോ ഓർക്കുക വിശ്వ നിശാനെ पर है। నేను చేతులు కలిపాను మీరు చేతులు కలిపారా గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వ నిశాని पर है। ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ विश्व निशाने पर है। اسملو اتكحتو يملو दुनिया चुगेदे आपस मज। Planet is on target means we are on target. विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर है। दो हमारे ऐसे गेस्ट थे जो फिल्म से हैं, बॉलीवुड से हैं और थिएटर से भी हैं। दोनों की अपनी बाध्यता है। अभी वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक की शूटिंग जो है वो 7 बजे तक पैकअप होने वाली थी, अखिलेंद्र मिश्रा जी की। वो हमारे होस्ट थे, वो हमारे गेस्ट नहीं थे। लेकिन अभी उनका लगातार मैसेज आ रहा है कि वो अभी कार्यक्रम उनका खत्म नहीं हो पा रहा है, काफी शोरगुल है, नहीं तो वो वहीं से कनेक्ट होते। दूसरे डायरेक्टर एनएसडी वो भी किसी कार्यक्रम में व्यस्त के कारण अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे और चूंकि तेज सर हमारे साथ हैं तो मैं उनसे इसके पहले की रिक्वेस्ट करूं एक अनवेलिंग के लिए एक छोटा सा ब्रीफ मैं देना चाहता हूं कि पिछले साल हमने जो कार्यक्रम किया था इसी तरह से 5 जून को जब हमारा पूरा 45 दिन का कार्यक्रम 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस से शुरू होकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन समाप्त होता है, तब हम इसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हैं। वैसे हमारा फाउंडेशन डे 22 अप्रैल को है। तो पिछले साल हमने ये जब कार्यक्रम किया था, तो उसमें हमने अपना वेबसाइट, लोगो, मैस्कट जो कि मोकलाई मेट ऑफ क्लाइमेट नाम से है, जिस पे अब एनिमेशन सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, बच्चों को कनेक्ट होने के लिए। सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे थे, वो पिछले साल अनवेल किए गए थे। वॉइस ऑफ बीएनपीएच करके हमने जो शुरू किया था, उसमें एस्पायरेशन ये था कि आने वाले समय में वो हमारा डिजिटल चैनल और साथ ही वो हमारा एफएम रेडियो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भले ही दुनिया के बहुत सारे चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है साथ-साथ, लेकिन प्राइमरी चैनल के रूप में हमने वॉइस ऑफ बीएनपीएच पे इसको चलाया है। बीएनपीएच एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स हमने पिछले साल शुरू किया था और उसमें एक एक्सपर्ट की तरफ से लेक्चर सुनने की बात थी और पहला इनॉग्रल लेक्चर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र सेंदे जी, जो कि एक्स डायरेक्टर थे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के और फाउंडर है ग्रीन टेरे फाउंडेशन के। वो तकरीबन 25-30 साल से लगातार भारत को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। 1973 ऑनवर्ड्स उन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में या अलग-अलग फोरम में भारत को विश्व पटल पे रिप्रेजेंट किया है। उनका इनॉग्रल लेक्चर था यूनिवर्सिटी कैंपस लिविंग लेबोरेटरी फॉर नेट जीरो, जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। पिछले साल जो हमारे गेस्ट थे, एस्टीम्ड गेस्ट थे, जिन्होंने अपने प्रैक्टिसेस को साझा किया था, उसमें डॉक्टर आईएस गुमन थे, लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी के, मिस्टर शशि नंद कोलियार, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1986 बैच पीसीसीएफ, मिस्टर विनय भाई पत्राले, प्रेसिडेंट भारत भारती, फाउंडर प्रेसिडेंट थे, प्रोफेसर पीएस शुक्ला, वाइस चांसलर नेहरू, जो कि बहुत ही पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट में, मिस्टर अखिलेंद्र मिश्रा, एक्टर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, पिछले बार ये गेस्ट थे, इस बार ये होस्ट रहने वाले थे, मिस्टर लॉयड हेल्फर्टी, को फाउंडर यूनिटी नेट इंटरनेशनल कनाडा से। ये सब हमारे वैसे विश्व स्तर पे रिप्रेजेंटेटिव है बीएनपीएच पे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सिंस वी ऑल आर लीडिंग लाइव्स, दैट्स व्हाई वी आर लीडर्स। सो बीएनपीएच में कोई भी फॉलोअर नहीं है, जितने भी हैं वो सब लीडर हैं और लीडर ही लीडर को तैयार करते हैं, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस आर लीडिंग आवर लाइव्स, सो वी आर इन अ पोजीशन टू लीड द एंटायर थिंग। तो सर ये एक ब्रीफ था जो आपके समक्ष हमने रखा और इन द मीन टाइम ये हमारे जो अगस्त ऑडियंस थे, जो नए जुड़े होंगे, उनको भी ये जानने का मौका था। अब आपसे सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे परमिशन लेते हुए, कि एक हमारा इनिशिएटिव जो बचा हुआ है वो आपके लिए हमने बचा के रखा है और वो है वीएनपीएच टेस्टिमोनी। ये सारे प्लेलिस्ट पे आ चुके हैं, लेकिन आज हमने ये दिन चुना था क्योंकि हमारे ये 45 दिन के कार्यक्रम में ये कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा था। लॉन्च करने के लिए आज का दिन हमने चुना था, तो आपके परमिशन से सर ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जी। थैंक यू। अब हमने आप सभी को सुना। एक वोट ऑफ थैंक्स हमारी परंपरा रही है हमारे अपने क्षेत्र में भी, और ऐसे भी इतने सारे लोगों ने अपना समय दिया है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार पीयूष, जो हमारे वीएनपीएच फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और वीज सार्क्स के सीईओ हैं, अगर वो अवेलेबल हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स है। पीयूष जी। जी, thank you, Dr. Nikhil Kant. Good evening once again to everyone present here. On behalf of VNPH Foundation, it is my heartfelt privilege to deliver the vote of thanks on this special occasion of World Environment Day and the 21st anniversary of Vishwa Nishane Par Hai Climate Crisis campaign. We are deeply grateful to all our honored guests and speakers who joined us today. Your words, your insights, and your passion for the planet added depth and meaning to this gathering. Thank you for taking the time to stand with this people-led climate movement. To all the attendees, supporters, and members of VNPH community, thank you for being here and for your continued commitment to environment consciousness. Your presence reflects the quiet strength of this movement, which has always believed that true change begins with voluntary action and heartfelt participation.
To Dr. Nikhil Kant, the visionary behind this unique fusion of poetry and climate awareness, thank you for reminding us that art can be activism and the emotion can lead to action. To all the organizers, volunteers, and behind the scene contributors, thank you for your dedication in making this online event seamless and soulful. Let us take today not only as a moment of celebration, but as renewed invitation to live with intention, to act with compassion, and to protect the only home we all share. Thank you once again. Let's keep the planet in focus. Let's keep Vishwa Nishane Par Hai alive in spirit and in action. Thank you once again. थैंक यू। और तेज सर चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर क्लोजिंग रिमार्क्स के रूप में कुछ बोलना चाहें, काफी देर से हमने उनको सुनने के बाद सिर्फ परमिशन लिया और वो भी सर ने सर हिला के दे दिया। तो अगर सर क्लोजिंग रिमार्क्स के रूप में कुछ बोलना चाहें तो हम आपको सुनना चाहेंगे। निखिल जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो ये कहूंगा कि जब पहाड़ मुस्कुराते हैं तो झरने बन जाते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पहाड़ रोने लगते हैं। तो जो ग्लेशियर का पिघलना पहाड़ के आंसू हैं, और अगर ग्लेशियर पिघलेगा और नदियां सूखेंगी तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको पता है। तो बहुत देर ना करते हुए आज से अभी से हमें छोटी छोटी बातें मतलब जीवन में, अपनी जीवन शैली में बहुत छोटी छोटी बातों में उसको अमल में लाना होगा। खाते वक्त, पीते वक्त, नहाते वक्त, तो हर कोई ये करने लगे तो अपने आप बदल जाएंगे एक्चुअली। जी, आपके सर एक बड़ी अच्छी कविता है, एक नदी थी सही, जिसको लोग सुनते रहे हैं, और वो एक कविता के माध्यम से कैसे मुझे याद है पिछले साल जब अखिलेंद्र मिश्रा जी ने अपनी पुस्तक से, जो कि बेस्ट सेलर है अभी भी अमेज़न पे, उससे उन्होंने एक कविता सुनाई थी जिसमें प्रकृति जो है वो मनुष्य को चैलेंज कर रही है। तो उसी तरह की कविता सर की भी है, एक नदी थी सही, और मुझे भी सुनने और पढ़ने का मौका मिला है। और वो मतलब कहीं न कहीं हमारे अपने, अगर ऐसे कहें तो रोंगटे खड़े कर देती है ऐसी कविता। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आप हमारे साथ, आपने भी समय निकाला, आप बहुत व्यस्त रहते हैं। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमने जो अभी वीएनपीएच पैनोरमा लॉन्च किया था, उसको हम अब चलाने जा रहे हैं और आप सभी से विदा ले रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीएनपीएच पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री को, जो छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक पूरा पैनोरेमिक व्यू देगा वीएनपीएच के बारे में, उसको देखें। लेकिन हम सभी आपसे विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके समक्ष पर्यावरण पे मेरी सबसे चर्चित कविता विश्व निशाने पर है, ये काव्य से निकला है, उसकी पहली कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता है विश्व निशाने पर है और ये इकलौती कविता है जो मुझे याद रहती है। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है। कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विश्व निशाने पर है। पानी, मिट्टी, वायु, जंगल और पहाड़े, हम दोहन करते संसाधन नहीं हमारे। पाया पूर्वज से बच्चों को देने सारे, छीन उन्हीं के हक कैसे हम उन्हें दुलारे। आने वाले कल को आज हराने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। सृष्टि बची रहे, प्रकृति बची रहे, जीवन बचा रहे, इसके लिए सजग होना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमने उनके घर में घुसकर उनको लूटा, मारा पीटा, नोचा खींचा, ठोका कूटा।
छीना छपटी में जो टूटा उनका टूटा, कहीं तो जाएंगे उनका घर बार है छूटा, तभी हमारा घर उनसे लुट जाने पर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। इस दिशा में एक युवा लगभग 2 दशक से अनवरत प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के लिए उन्हें अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। जो सूरज सदियों से आता हमें जगाने, किरणें तीखी आने वाली हमें सुलाने, रहे बजाते गर डफली से राग पुराने, स्वयं धरा अस्तित्व सुरक्षित रखना जाने, धरती बच जाएगी हम ही जाने पर हैं, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। क्लाइमेट क्राइसिस यानी कि जलवायु संकट को लेकर उन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है, उसमें देश विदेश से अनेक लीजेंड और संस्थाएं जुड़ती जा रही हैं। उस युवा का नाम है डॉक्टर निखिल कांत, प्रकृति के कवि, क्लाइमेट प्रैक्टिशनर, विश्व निशाने पर है के संस्थापक डॉक्टर निखिल कांत। जल अमृत जग जीवन आज बुझाने पर है, सागर में ही सारी धरा समाने पर है, कर्म किए जाने थे महज दिखाने भर है, बदल रही जलवायु विश्व निशाने पर है। तो इस अनोखे कार्यक्रम जिसका नाम है विश्व निशाने पर है में एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। क्या विश्व निशाने पर है? मुझे लगता है और इसको बहुत खूबसूरती से उजागर किया है डॉक्टर निखिल कांत ने अपनी पोइट्री से, अपने कैंपेन से। कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं कार्बन एमिशन की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो विश्व निशाने पर तो है, विश्व निशाने पर है, पर रहना नहीं चाहिए। और विश्व निशाने पर कब तक रहेगा और हम इसको कैसे निशाने से हटा सकते हैं। फिल्म पत्रकारिता के क्षेत्र में सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं बेहद करीब से प्रकृति, जलवायु, पर्यावरण इस विषय पे बहुत सोचता रहा हूं। और मेरा मत है कि जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, हम उसके लिए अवेयर नहीं होंगे, इस संकट को आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे प्लास्टिक के पौधे दिखा दिखा कर अपनी जनरेशन्स को हम खुश करते रहेंगे। मैं ये बताते हुए बेहद उत्साहित महसूस कर रहा हूं कि मुझे विश्व निशाने पर है जलवायु संकट जागरूकता अभियान के बारे में जानने और उसमें शामिल होने का अवसर मिल गया है। जो जलवायु के जो बड़े अभ्यासी दंपत्ति डॉक्टर निखिल कांत और डॉक्टर अंजलि कांत वर्षों से चलाते आ रहे हैं, ये जागरूकता मानवीय सक्रियता को दर्शाता है, जो अपने मन से कुछ करने के लिए, इस पृथ्वी के लिए कुछ करने के लिए आपको उकसाता है। Very few people really understand. We need to spread this awareness to the masses, and one such job is being done by Dr. Nikhil Kant through his poetry. His series Vishwa Nishane par hai is a very important work in bringing the awareness to the masses, and I hope with this effort we will be able to bring a big change. ये हमारे प्रिय निखिल जी ने बहुत ही सुंदर अभियान को आगे लेकर के चलने के लिए, सभी को जुड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। और कविता है कि विश्व निशाने पर है। मुझे लगता है उस कविता को बहुत सारे गुणी लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूँ। और प्रिय निखिल जी ने बहुत ही उम्दा ये अभियान शुरू किया है, मैं उनके साथ हूँ। मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी इस अभियान के लिए और निखिल जी के लिए से कि अन्न जल वायु बचैहा, रखिहा इतना तो ध्यान, निखिल जी के संगे संगे चलिहा, पूरा होई अभियान। विश्व में जो जलवायु का संकट है उसको लेकर के मिस्टर निखिल कांत जो जागरूकता फैला रहे हैं,
और पर्यावरण को लेकर के जो हम सबका एक मकसद होना चाहिए कि हमें इसे बचाना है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए, उसको लेकर के जो कार्य किया जा रहा है मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ। और निखिल कांत जी इसको लेकर के काफ़ी कुछ लिखते भी हैं, जिन कविताओं को वो लिख रहे हैं, जिस तरीके से वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और मुझे लगता है कि हमारे आगे की जनरेशन को प्रेरित करने वाला कार्य है। I would like to congratulate Dr. Nikhil Kant and his team for his spearheading a movement which निशाने पर है। डॉक्टर निखिल कांत जी जो पिछले 2 दशकों से जलवायु संकट के ऊपर कविता हो, संगीत हो और बड़ा ही उनके अच्छे विचारों के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैं भी पिछले 2 वर्षों से उनके इस मिशन को जब सुना तो और लोगों तक मेरा ये रहता है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क दुर्घटना के खिलाफ, बल्कि जलवायु संकट के बातें भी 2 शब्द मैं हर जगह रखने का प्रयास करूँगा। जो कविता की एक लाइन है कि विश्व निशाने पर है, तो आप समझिए कि प्रकृति अगर ही नहीं रहेगी तो इंसान का रहना संभव ही नहीं है। कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा ही योगदान देना है, जो कि यही चीज़ उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर निखिल कांत जी की कविता है हम सबको जगाने का प्रयास कर रही है। तो सर को बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम एज में इस प्रकृति के लिए जो 2004 से उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये अपनी लड़ाई एक योद्धा के रूप में, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आज मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े चाहे कॉरपोरेट वर्ग हो या कोई भी चीज़ हो, हर कोई उनसे एक इंस्पायर हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है और उसी सोच को लेकर के मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ। डॉक्टर निखिल कांत जी की जो कविता हो या उनके जो गीत हैं इतने बड़े स्तर पर जो हमें रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जब आप उनकी कविता को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, डॉक्टर निखिल कांत जी के मिशन से हम भी उनके साथ जुड़े। विश्व निशाने पर है। इस मुहिम को पिछले 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर कांत जी चला रहे हैं। एक से एक पर्यावरणविद इसमें सम्मिलित हैं, आम लोग सम्मिलित हैं। अब मैं भी सम्मिलित हो गया हूं इस मुहिम में। पर्यावरण के साथ जो हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर उस दुर्व्यवहार को अच्छे व्यवहार में नहीं बदला हमने तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो आइए, विश्व निशाने पर है, जलवायु संकट के इस मुहिम से जुड़े, इसमें सम्मिलित हों, बढ़ चढ़कर भाग लें और लोगों को जागरूक करें अपने जलवायु के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपने जंगल के प्रति, अपने समुद्र के प्रति, अपने नदियों के प्रति, अपने पेड़ों और पौधों के प्रति, अपने वायु के प्रति, अपने जल के प्रति, अपने पृथ्वी के प्रति। प्रकृति मनुष्य को चेतावनी दे रही है। प्रकृति का प्रहार, मचा हाहाकार, सुना चित्कार, त्रस्त संसार, हो रहा संहार, कौन जिम्मेवार? ये विश्व निशाने पर है, पहले मुझे लगा शायद एक कविता है, लेकिन ये केवल कविता नहीं, एक कैंपेन है। ये मानिए कि शायद ये एक वो धारणा है जो पूरे विश्व की अवधारणा को बदल सकती है। एक बहुत बड़ा प्रयोग डॉक्टर निखिल कांत जी ने किया है, मैं बहुत साधुवाद उनको देता हूँ। बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने किया है। ये कविता सभी को सुननी भी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। विश्व निशाने पर है में उन्होंने जो पूरे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और इससे पूरे विश्व पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी जो बात कही है, ये बहुत विचार योग्य है। और इतना डीपली सोचना, इतना डीपली मंथन करना, उस कविता के रूप में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी कविता पढ़कर विश्व के सभी लोग जरूर जागेंगे और जो आप ये जलवायु परिवर्तन पर अपनी एक कलम से एक बहुत बड़ी चोट कर रहे हैं उन लोगों पर जो जलवायु के प्रति बिल्कुल भी बहुत विचार नहीं कर रहे हैं, उदासीन हैं, उन्हें भी जागना होगा। और मैं हास्य कवि हूँ, पर हास्य कवि होने के साथ साथ व्यंग की बात करता हूँ, देश को जगाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं मुझसे आगे निकल गए हैं डॉक्टर निखिल कांत जी और देश को जगाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, पूरे विश्व को जगाने के लिए एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। एक अभिनेता होने के नाते मैं बहुत सारी कहानियों, कविताओं से प्रभावित हुआ हूँ।
लेकिन डॉक्टर निखिल कांत जी की जो कविता है विश्व निशाने पर है, इस कविता ने मुझे कुछ ज्यादा ही प्रभावित किया और सोचने पे मुझे मजबूर किया कि जो मेरे अंदर जलवायु को लेकर समझ है, जो मुझे मालूम है कि ये जरूरी चीज है करने के लिए, या जो मेरी चाहत थी कि मैं कभी करूंगा, एक समय आएगा जब मौका आएगा तो मैं कुछ करूंगा। लेकिन डॉक्टर निखिल जी की जो कविता है विश्व निशाने पर है, जो कविता संग्रह है, इसके पढ़ने के बाद मुझे सोचने पे मजबूर किया, मुझे जागरूक किया कि मैं समय का इंतजार ना करूं और जितना जल्द हो, जब से शुरू हो, मैं शुरू कर दूं अपना ये कार्य, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि जलवायु पर जिस तरह का संकट मंडरा रहा है, हमें उसके लिए 2 कदम आगे बढ़कर कार्य करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं ये जो अभियान है विश्व निशाने पर है, इसका एक पार्ट हूं, एक हिस्सा हूं। विश्व निशाने पर है बाय डॉक्टर निखिल कांत, क्लाइमेट क्राइसिस अवेयरनेस कैंपेन। इस सुंदर कविता की रचना इन्होंने 2004 में ही कर दी थी। आज भी मानो इस कविता की एक एक शब्द आपकी आत्मा को जैसे झंझोरी देता है। भला मैं कैसे पीछे रहती। As a singer, least I could contribute towards this beautiful campaign was I lent my voice to this poem. This poem was already gaining a lot of attention on different platforms, and I feel privileged, proud to be part of this campaign. निखिल कांत जी काव्य स्वरूप में इस संकट को सभी के साथ साझा कर रहे हैं। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। कविताएं प्रेम पर लिखी जाती है, दोस्ती पर लिखी जाती है, निसर्ग पर लिखी जाती है, मगर जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उसकी जागरूकता के लिए कविता लिखना ये एक विशेष बात है और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इस वैश्विक समस्या की तरफ आकर्षित हो रहा है। It gives me great pleasure to compliment Dr. Nikhil on his human initiative, Vish Nishane Par, for environment protection by climatic crisis campaign. I was really impressed by the proactive approach being followed in not preaching but practicing, taking small baby steps for a sustainable future. Dr. Nikhil reminds us of our responsibility towards how we can play an important role to preserve biodiversity and conserve nature. His medium of communication through poetry and music to convey a social message reminds me of our Bhakti movement period. Army and defense forces have always been at the forefront of nature conservation on land, sea, and all types of terrain, be it through ecological task forces in greening of deserts or providing green lungs of cities through cantonments. Nikhil is doing a great job. What really inspired me to join this movement is that we really need to understand no corner on this globe is immune from the devastating consequences of the climate change. I also believe that we all want to ensure our future is safeguarded from the impacts of climate crisis. And yeah, I would also like to congratulate Mr. Nikhil Kant. He's been doing an amazing job. I feel like it takes a lot of courage. It takes a lot of motivation to be able to stand up for a cause like that. And the amount of dedication he's been putting towards this movement is just amazing. So you're doing an amazing job. Dr. Nikhil Kant, I wanted to take a moment to express my heartfelt appreciation for your tireless efforts in raising awareness about the imminent threat of climate change that looms large on the humanity. Your dedication and passion for addressing these critical issues are truly commendable. As you have so eloquently pointed out, humanity finds itself at a pivotal moment in history where our actions have placed the planet on a perilous slope. Your initiative serves as a beacon of hope, reminding us that it's not too late to reverse the damage that we have inflicted upon Mother Earth. Your efforts to educate, inspire, and mobilize others to take action are
invaluable. It's going to be an priceless contribution of yours to humanity. विश्व निशाने पर है, यह आपने एहसास तो हमें दिला ही दिया है, पर निशाने पर जो प्राणी हैं उनमें सबसे आगे हम मानव ही हैं। तो ये चेतना जगाने के लिए और जो आपने पहल की है इसको, और आपका जो जज्बा है, जो आपने माध्यम चुना है, जो आपने अलख जगाई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सलाम करना चाहूँगा। माननीय निखिल कांत जी को सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि जब तक हमारे देश में ऐसे युवा हैं, उनके मन में एक ज्वाला जगती है। वो जो कहते हैं वो कहते ही नहीं है। जब आपने कहा कि मेरे घर में एसी नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि क्यों हमारे मन में ये बातें रहती हैं कि कोई व्यक्ति इन भौतिक सुख सुविधाओं से ही बड़ा होता है। सच में आपकी कविताएं जन जागरण कराने वाली हैं। उन्हें पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, उन्हें कई कई बार गाया जाना चाहिए। लगातार ये बढ़ती चली जा रही है और ऑल द टाइम हमारा जो बॉडी है वो एसी करता है। लेकिन बेटा आज बताएं कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल, और डॉक्टर निखिल दिल्ली में रहते हैं। इसमें आपने एसी को आउट कर दिया है। आउट नहीं बल्कि इन ही नहीं होने दिया है। मतलब ये कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई मुझे या मेरे परिवार को। 50 डिग्री तो बाहर है। हाँ ठीक है ना, हमेशा से गर्मी रही है और गर्मी जब बढ़ती है तो हम हमारा शरीर उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। और ये सबसे अच्छी भूमिका रही है प्रकृति की कि हमें उस हिसाब से अडेप्ट करने की शक्ति देता है। जब हम इस शक्ति को नहीं पहचानेंगे निजी तौर पे तो हम क्लाइमेट क्राइसिस में कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। मतलब कि आप मेडिटेशन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जिंदगी जीते हैं, हम जिंदगी मैनेज नहीं करते। जब मेडिटेशन नहीं करते, ये मेडिटेशन नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा संसाधन का दोहन करने वाला इंसान हो, वो एक या दो ऐसे प्रैक्टिस जरूर करता है जिससे क्लाइमेट क्राइसिस नहीं हो, प्रकृति सुरक्षित रहे। उसको भी अपनी और अपने परिवार और आने वाली पीढ़ी की चिंता है। ये अलग बात है कि वो नेसेयर्स हो जाते हैं, डिनायर्स हो जाते हैं, और डिनायर्स वो होते हैं जो फैक्ट को जानते हुए भी छुपा के रखना चाहते हैं। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। कहते हैं कि फ्रेंडली हो जाना। भाई गर्मी भी अपनी दोस्त है, ठंड भी अपनी दोस्त है, बारिश तो है ही। देखिए कहीं ना कहीं हमने इस चीज से मानने से इनकार कर दिया हुआ है कि इंसान जो है वो भी प्रकृति की रचना है। पेड़ पौधे जो करते हैं उसको प्राकृतिक मान लेते हैं, हम जो करते हैं उसको आर्टिफिशियल जैसा कुछ वर्ड देते हैं। वास्तव में हम प्रकृति की नकल कर रहे होते हैं और इसी बहाने प्रकृति से बड़ा हो जाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ या तो अहंकार है या पखंड है। पखंड भी इस तरह का है कि हम जब सेव आवरसेल्फ बोलना चाहिए तो हम सेव अर्थ बोलते हैं। तो उसी हिसाब से हमने अपनी जो कैंपेन शुरू की थी विश्व निशाने पर है, वास्तव में हम निशाने पर हैं। लेकिन लोग समझेंगे तभी जब हम बताएंगे कि विश्व निशाने पर है। आइए समझिए विश्व निशाने पर है, और फिर जब जाइए तो ये मान के जाइए कि हम निशाने पर है। क्या बात है, हम निशाने पर हैं। विश्व निशाने पर है मीन्स प्लैनेट इज ऑन टारगेट। विश्व निशाने पर है मतलब हम निशाने पर है। Planet is on target means we are on target. Save Earth is a hypocrisy. So let's join hand to save ourselves.